प्रिय भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम, and of course namo buddhaya, jai bhim to all the people sitting at home watching this on TV. और निश्चित ही सभी लोग जो घर पे बैठकर टीवी पे इसे देख रहे हैं उनको भी नमो बुद्धाय और जय भीम। It is amazing to be standing here in this place at this time. बहुत ही अद्भुत लगता है कि यहाँ पे इस वक्त इस मंच पर खड़े रहना। My mind immediately goes back 61 years. और मेरा मन तुरंत जो है 61 साल पीछे चला जाता है। Right here there would have been lakhs of people. बस यही इसी स्थान पे जो है लाखों लोग जमा हुए होंगे। They would have been very poor people. और वो बहुत ही गरीब ऐसे लोग होंगे। They were in their best dress, but it would not have been rich dress. वो अपने सर्वोत्तम कपड़ों में आए हुए होंगे, लेकिन वो कुछ महंगे कपड़े नहीं होंगे। You can imagine them all, just ranks upon ranks of them here. और आप कल्पना कर सकते हैं कि कई लोग बस यहाँ पे उपस्थित होंगे। All facing towards the stupa there. और सभी लोग जो है वो स्तूप की ओर मुँह करके खड़े होंगे। Just seeing a tiny figure in the pandal at the front. और वहाँ पे जो पंडाल था वहाँ पे एक छोटी सी जो आकृति दिखाई दे रही उसको वो देख रहे होंगे। Hearing his voice just booming across this land. और उनका जो आवाज है इस भूमि पे जो गूंज रहा होगा उसको वो सुन रहे होंगे। And with him going for refuge to the three jewels. और उसके साथ वो जो है त्रिरत्नों की शरण में गए होंगे। With him taking the precepts. उनके साथ जो है उन्होंने शील ग्रहण किए होंगे। With him taking the 22 pratigyas. और उनके साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली होंगी। Leaving behind the old religion, the old beliefs. पुराना धर्म, पुराने विश्वासों को पीछे छोड़ा होगा। What an extraordinary event it must have been. और कितना अद्भुत ऐसा वो घटना रही होगी। And looking out over you, seeing you now, many of you well dressed, many of you obviously with good jobs. और अभी आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी नौकरियाँ आपके पास है। You're the grandchildren, the great grandchildren of people who are here. Many of you. जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप उनके पोता पोती होंगे, बहुत सारे लोग आप में से। Because of what happened then, you are here now as you are now. और वहाँ पे उस वक्त जो भी हुआ उसकी वजह से आप यहाँ पर हो और जो भी आप हो। So it's really good, yes. और इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। Yes, a good clap. It's really good that we're here with this Buddha festival on this place. और इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम यहाँ पे हैं और इस बुद्ध महोत्सव के साथ यहाँ पर हैं। A huge revolution was launched here at this place 61 years ago. 61 साल पहले इस जगह पर एक बहुत ही बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी। That revolution has already had a big effect in India. उस क्रांति का भारत में पहले ही बहुत परिणाम हो चुका है। It's having an effect all over the world actually. और इसका सारी दुनिया में प्रभाव हो रहा है। You see your brothers and sisters here from other countries. आप देख सकते हैं कि आपके भाई बहन यहाँ उपस्थित है जो दूसरे देशों से आए हुए हैं। They're picking up the Baba Sahib mood, huh? और वो जो बाबा साहब का मूड है उसको वो महसूस कर रहे हैं, अपने साथ ले रहे And हैं। they'll take it back wherever they go. और जहाँ भी वो जाएंगे उसको वो अपने साथ लेकर जाएंगे। So that revolution that Baba Sahib launched 61 years ago is really making big progress. और इसलिए बाबा साहब ने जो 61 साल पहले क्रांति का आरंभ किया था उसका बहुत विकास हो रहा है। Oh, but brothers and sisters, what a long way there is to go. और भाइयों बहनों कितना अभी लंबा रास्ता है जो अभी भी तय करना है। It's only just a little beginning in 60 years, huh? 60 साल में केवल थोड़ा सा जो है वो शुरुआत हुई है। So little has been done, really. और बहुत ही थोड़ा सा काम अभी हुआ है। Just a few drops placed in the ocean, huh? और समुद्र में अभी कुछ ही बूंदें उतारी गई हैं। It's very good, but there's so much more to do. बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन बहुत सारा करना अभी बाकी है। And sometimes we feel this is too slow. और कभी-कभी हमें ऐसे महसूस होता है कि बहुत धीमी गति से चल रहा है। Sometimes we feel, can we not do something faster? और हमें महसूस होता है कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जो हम बहुत तेजी से कर सकते हैं। But Baba Sahib himself made it clear that this way is not a quick way. लेकिन बाबा साहब ने स्वयं ही ये स्पष्ट किया था कि ये जो मार्ग है ये बहुत ही तेज रफ्तार मार्ग नहीं है। He made it clear just before he died in Kathmandu.
और अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले काठमांडू में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। Yes, violent revolution can bring about change very quickly. अब निश्चित ही हिंसात्मक जो क्रांति होती है वो बहुत तेजी से बदलाव ला सकती है। But it doesn't last, it just replaces one power structure with another. लेकिन वो बनी नहीं रहती है, बस एक ताकत को वो दूसरी ताकत से जो है वो बदल देती है। And Baba Sahib said, my way is the long way, the slow way. और बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जो रास्ता है वो लंबा रास्ता है, धीमा रास्ता It's है। helping people to change their minds, change their hearts. और ये लोगों को मदद करता है कि वो अपने मनों को बदले, वो अपने दिलों को बदले। So they take on better principles to guide their lives. ताकि वो अपने जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए अच्छे मूल्यों को ग्रहण कर सके। And he said some people may find this tedious. और उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत बोरियत भरा They may लगे get weary. और वो शायद इसमें थक भी जाए। But he said, I am certain this is the sure way. लेकिन वो कहते थे कि मुझे इस बात का यकीन है कि यही रास्ता जो है वो हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। Of course, we mustn't relax. अब निश्चित ही हमें सहज रहना है। It will only succeed if we are vigorous. और ये तभी संभव होगा जब हम पूरी ऊर्जा के साथ कार्य But करें। even if at some times we feel despair because of the situation around us, अब निश्चित ही जो हमारे इर्द गिर्द परिस्थिति है उससे हम कभी कभी निराशा महसूस कर सकते हैं, we must never give up. लेकिन हमने कभी अपने प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए। Baba Sahib would certainly never give up. और बाबा साहब ने कभी भी अपने प्रयास छोड़े नहीं होते। Of course, Baba Sahib's the revolution that he launched was the relaunching of a revolution that began in India 2,500 years ago. अब निश्चित ही बाबा साहब ने जो क्रांति आरंभ की थी वो उसी क्रांति का फिर से शुरुआत करना था जो 2500 साल पहले इस भूमि पे आरंभ हुई। It was the revolution launched by the greatest child of India, Bhagwan Buddha. और भारत का जो सबसे महान ऐसा पुत्र था भगवान बुद्ध, उनके द्वारा वो क्रांति का आरंभ हुआ था। I'm a Buddhist, so I believe it was the greatest human being ever. और क्योंकि मैं बौद्ध हूँ इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अब तक जो मानव हुए हैं उसमें वो सर्वोत्तम थे। And he was from your country. और वो आप ही के देश के थे। Didn't have white skin like mine. मेरी तरह उनकी सफेद त्वचा नहीं थी। He had beautiful brown skin like. तो बहुत ही सुंदर ऐसे उनकी गहरी चमड़ी थी। He was like you, not like me. तो वो आपके जैसे थे, मेरे जैसे नहीं थे। He was your ancestor. वो आपके पूर्वज थे। He's my ancestor too. लेकिन वो मेरे भी पूर्वज थे। And he launched a huge change in the world. और पूरी दुनिया में बहुत बड़ा उन्होंने बदलाव की प्रक्रिया का आरंभ किया। He introduced into the world something completely new, something completely different. तो उन्होंने दुनिया को ऐसी बात से परिचित कराया था जो बहुत ही अलग था, बहुत ही नया था। We don't always realize just how revolutionary the Buddha was. हमें कभी-कभी पता नहीं चलता कि बुद्ध कितने क्रांतिकारी थे। Baba Sahib deals with this in the Buddha and his Dhamma. और बाबा साहब इस बात को बताते हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में। But the Buddha made a huge change in the ideas and the understanding of people. तो लोगों की जो कल्पनाएं थी, लोगों की जो समझ थी, उसमें बुद्ध ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। There's so much one could say to point out that change. और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ उस बदलाव को आपके सामने रखने के But लिए। let me just choose a few things. लेकिन मैं कुछ ही चुनिंदा बातों का चुनाव करूँगा। You remember that after his enlightenment, the Buddha, for the first time, met somebody under the Ajapala Nagrodi. तो आपको याद होगा कि अपने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध पहली बार अजपाल निग्रोध के नीचे किसी से मिले थे। He was sitting under the tree, and a Brahmin came to meet him. तो एक वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, ब्राह्मण उनसे मिलने आया। And the Brahmin asked, "Well, what is really a Brahmin?" और फिर ब्राह्मण उनसे पूछता है कि ब्राह्मण वास्तव में कौन होता है? We know that he was challenging the Buddha. अब हम जानते हैं कि वो बुद्ध को एक चुनौती दे रहा था। What are you doing sitting there? और वो कहना चाह रहा था कि तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? So the Buddha said, "Well, a Brahmin, a great person, is somebody who has moral worth." और बुद्ध से कहते हैं कि ब्राह्मण एक महान व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसके नैतिक मूल्य होते हैं। He's not somebody who's just born into a particular section of society. तो वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जो समाज के किसी विशिष्ट वर्ग में जन्म लेता है। He's somebody with real moral qualities, real spiritual वो qualities. ऐसा व्यक्ति होता है जिसके वास्तविक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। So in that few phrases, the Buddha challenged
the whole hierarchical system. तो अपने कुछ ही उन चुनिंदा वाक्यों में बुद्ध ने वर्गवाद की जो पूरी पद्धति उसको चुनौती दे डाली थी। And that challenge isn't just for India. और ये चुनौती केवल भारत के लिए नहीं है। It's a challenge for the whole world. ये पूरे विश्व के लिए एक चुनौती In है। England we don't have caste. अब इंग्लैंड में हमारे पास जातियां नहीं होती। The only caste we have is what Indians bring. और वही जातियां वहाँ पर हैं जो भारतीय वहाँ लेकर आते But we हैं। have a class system still. लेकिन अभी भी हमारे पास जो है वो वर्ग व्यवस्था है। We have racial inequality. और वर्ग पे आधारित असमानता हमारे यहाँ है। These inequalities are everywhere. और ये असमानताएं जो है वो हर जगह है। And the Buddha rejected them completely. और बुद्ध ने पूरी तरह से इन्हें नकार दिया था। So what's important is what kind of human being you are. और उन्होंने कहा कि ये बात ज्यादा मायने रखती है कि आप किस प्रकार के मनुष्य हो। What qualities you have. कौन से प्रकार के गुण आप में How हैं। much you're growing as an individual. और एक व्यक्ति के तौर पे आप कितना विकसित हो रहे हैं। So that's the kind of revolutionary the Buddha was. और इस प्रकार के क्रांतिकारी बुद्ध थे। Those are the ideas he brought into India. तो ये वो विचार थे वो जो भारत में लेकर आए। There's another very important, very little known fact. और ये बहुत सारी महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही कम जानी ऐसी बातें। We all know that Buddhism is the religion of Maitri, of Karuna. हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म मैत्री और करुणा का धर्म है। We know that loving kindness, compassion are central to the Buddha Dhamma. और हम जानते हैं कि करुणा और मैत्री जो है बौद्ध धर्म का केंद्रीय हिस्सा है। The Buddha said, Baba Sahib said that it's Maitri, Karuna, and Prajna that define Buddhism. और बाबा साहब कहते हैं कि मैत्री, प्रज्ञा और करुणा ही वो बातें हैं जो बौद्ध धर्म की व्याख्या करती है। What we don't realize is this was unknown in Indian religion before the Buddha. जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि बौद्ध धर्म के पहले ये बातें भारत में कभी किसी को पता ही नहीं। The idea of Maitri, of love between human beings just as fellow human beings was unknown. तो ये कल्पना कि दो मनुष्यों के बीच में मनुष्यों वाला ही प्रेम हो सकता है ये भारत को अपरिचित था। The idea that we should have Maitri for others just because they're another human being wasn't known. और ये कल्पना कि हमें दूसरे मनुष्य से केवल इसीलिए मैत्री करनी कि वो मनुष्य है ये पता नहीं था लोगों को। So this was a huge revolution. ये बहुत बड़ी क्रांति थी। There are many other points, some of which I'll be making. तो बहुत सारी अन्य बातें भी हैं जो मैं बताते रहूँगा। So for instance, the Buddha taught karma, he taught again becoming, punabhava. तो उदाहरण के तौर पे बुद्ध कर्म की बात करते हैं, वो पुनर्भव की बात करते हैं। Now that's part of common Indian religion, even if it's not usually understood properly. भले ही उसे ठीक तरह से समझा नहीं जाता है, लेकिन एक आम भारतीय धर्म का वो हिस्सा बन चुका But है। it came from Buddhism, it came from Jainism and the religions of the Samanas. लेकिन ये बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और श्रमण लोगों का जो धर्म था उसमें से आया It हुआ। wasn't part of the religious background generally. लेकिन यहाँ की जो धार्मिक पार्श्वभूमि थी उसका ये हिस्सा नहीं था। So the huge revolution the Buddha wrought in these terms. और इस प्रकार से बुद्ध ने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। But it goes further. लेकिन ये बात इससे भी आगे जाती He है। taught this very, very important teaching of Pratityasamudpat. उन्होंने प्रतीत्यसमुत्पात की बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा दी थी। This is a way of understanding life which was completely new. और ये जीवन को इस प्रकार से समझने का तरीका था जो बिल्कुल ही नए प्रकार का। Since that's the main topic of my conversation, I'm not going to briefly say it now. और क्योंकि ये मेरे प्रवचन का मुख्य हिस्सा है, उसके विषय में मैं संक्षेप में नहीं कहूँगा। But the ideas that the Buddha communicated at that time, and there are many more, were completely fresh. लेकिन जो विचार बुद्ध ने उस वक्त संवादित किए थे वो पूरी तरह से नए थे, ताज़ा थे। And they've made a huge impact on India, they've made a huge impact on the world. और भारत को उन्होंने बहुत बड़े प्रकार से प्रभावित किया और पूरे विश्व को भी। Look, they made a big impact on an Englishman in England, in London in 1960s. तो आप देख सकते हैं कि 1960 में लंदन में एक अंग्रेज पर भी उनको प्रभावित किया है। Our friends here, yeah? और हमारे जो मित्र यहाँ पे बैठे हैं उनको भी। This revolution launched by the Buddha has influenced the whole world. तो ये जो क्रांति बुद्ध ने आरंभ की थी इसने समूचे विश्व को प्रभावित किया है। Unfortunately, after 1,000 years, 1,500 years, India forgot the Buddha. लेकिन दुर्भाग्य से 1500 साल पहले साल के बाद भारत बुद्ध को भूल गया। Buddhism went underground.
और बौद्ध धर्म जो है वो लुप्त हो गया, But it is underground, it's still there. लेकिन अभी भी वो जमीन के नीचे दबा हुआ है, वो उपस्थित है वहाँ पे। Anywhere you dig in India, you'll find Buddhist remains. और भारत में कहीं भी आप उत्खनन करो, खनन करो, आप बौद्ध अवशेष पाओगे। Anywhere you look in Indian culture, you'll find somewhere Buddhist influence. और भारत की संस्कृति में आप कहीं पे भी देखिए बौद्ध प्रभाव को आप वहाँ पे पाओगे। The great Dr. Babasaheb Ambedkar, 61 years ago, reawakened the Dhamma in India. और महान बाबा साहब अम्बेडकर ने 61 साल पहले यहाँ पे बुद्ध धर्म को जो है फिर एक बार जागृत किया। So now those ideas that went underground are coming out into the open. तो अब वो विचार जो जमीन के नीचे दफन हो गए थे वो बाहर निकल रहे हैं। And they're beginning to have their earthquake-like effect. और एक भूकंप के जैसा जो है उसका वो प्रभाव हो रहा है। And that earthquake will go on for generations. और ये जो भूकंप की लहरें हैं वो कई पीढ़ियों तक जो है वो आगे जाते हैं। Until liberty, equality, fraternity, justice really reign. और तब तक जब तक कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता का वास्तव में यहाँ पर राज नहीं आ जाता। So it's wonderful to be speaking about these things here on this sacred और place. इसलिए इस पवित्र भूमि पे इन बातों के विषय में बात करना बहुत ही अद्भुत है। Something that Baba Sahib realized very, very clearly, very early on, was the power of belief and of idea. तो बाबा साहब को एक बात जो है बहुत ही जल्द समझ में आ गई थी, वो ये है कि विश्वास में क्या शक्ति होती है। He realized the extent to which people's lives are shaped by their beliefs. और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लोगों के जो विश्वास होते हैं वो उनके जीवन को आकार प्रदान करते हैं। Everybody knows that, all the Indians at least will know that very great work, Annihilation of Caste. और सभी लोग जानते हैं, भारतीय लोग जानते हैं उनका महान ऐसा कार्य जो है जातिभेद निर्मूलन। Our teacher Urgen Sangharakshita referred to that as a true Buddhist work. और हमारे गुरु उर्गेन संगरक्षिता उसे एक वास्तविक बौद्ध कार्य मानते हैं। But Baba Sahib wasn't a Buddhist at that time. और उस वक्त बाबा साहब जो है वो बौद्ध नहीं थे। 1937, yeah? तो 1937 में हुआ लिखा गया था। So 20 years before he became a Buddhist. और उनके बौद्ध बनने से 20 साल पहले वो लिखा But his था। outlook was already Buddhist. लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था वो पहले से ही बौद्ध था। And he showed how the beliefs that people have, the attitudes they have, shape their behavior. और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लोगों के विश्वास, उनकी प्रवृत्तियां जो है उनके व्यवहार को आकार देती हैं। They shape human society. और किस प्रकार से वो मानवीय समाज को आकार देती है। They shape the way in which we relate to each other. और किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है उसे वो आकार देती है। And he was especially concerned with the terrible evil of caste. और जाति की जो बहुत बुराई थी उसके बारे में भी वो बहुत सजग थे। And he showed how that idea came out of a system of ideas. और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से ये पद्धति जो है विचारों की ही एक पद्धति से निर्माण हुई है। And he showed how if you want to change that system, you've got to change the ideas. और उन्होंने ये बताया कि अगर आपको इस पद्धति को बदलना है तो फिर आपको इन विचारों को बदलना होगा। You've got to change the mind. आपको मनों को बदलना होगा। He very famously, and I always quote this, said that if the world can only be reformed by the reform of the mind of human beings. तो ये बहुत प्रसिद्ध है, मैं भी दोहराते रहता हूँ। उन्होंने कहा है कि दुनिया में परिवर्तन तभी आ सकता है जब मनों में परिवर्तन आता है। And yes, he showed in Annihilation of Caste this relationship between our ideas and attitudes, the attitudes of our minds, and the world that we create. और फिर जातिभेद निर्मूलन में उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार के हमारे विचार और प्रवृत्तियां जो है इस बात को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से हम दुनिया को निर्मित करते हैं। Most of you here have been shaped by the idea of the Buddha Dhamma. और आप में से बहुत लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनके जीवन को आकार बौद्ध धर्म की वजह से मिला है। You've made a success of your lives because of that attitude and idea.
और उस प्रवृत्ति और विचारों की वजह से आपने अपने जीवन को यशस्वी बनाया है। So these ideas are so important. और इसलिए ये जो कल्पनाएं विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। These ideas are the basis for a free and just society. और ये विचार जो है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। Baba Sahib says Maitri is the basis of Bandhutva, fraternity. बाबा साहब कहते हैं कि मैत्री जो है बंधुत्व का आधार है, बुनियाद है। No Maitri, no fraternity. अगर मैत्री नहीं है तो बंधुत्व नहीं है। No fraternity, no liberty, no equality. अगर बंधुत्व नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है। So Baba Sahib took the Buddha's key ideas and translated them into a transformation of society. तो बाबा साहब ने बुद्ध के प्रमुख विचारों को लिया है और उनको जो है वो बदला है आधुनिक समाज की। Because he understood so clearly the way in which our mental attitudes shape the way we act, shape our interrelationship with each other. क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से देख लिया था कि किस प्रकार से हमारी मानसिक प्रवृत्तियां जो है हमारे विचारों को और हमारे एक दूसरे के साथ व्यवहार को प्रभावित करती We है। don't have to think very hard to see examples of this. और इसके उदाहरण देखने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। Many of you will be familiar with the history of Europe in the 20th century. आप में से बहुत लोग 20वीं शताब्दी के यूरोप के इतिहास से परिचित होंगे। The Second World War broke out in 1939. तो 1939 में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। And actually many Indian soldiers gave their lives in that war. और बहुत सारे भारतीय सिपाहियों ने उस युद्ध में अपनी जान गंवाई। And the war was caused by an inhuman system in Germany at that time that condemned millions to death. और उस वक्त जर्मनी में जो एक अमानवीय पद्धति प्रचलित थी, उसकी वजह से ये युद्ध जो है वो शुरुआत हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। Millions and millions of people died because of the ideas that formed Nazi Germany. और बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए उन विचारों के कारण जो नाजी जर्मनी में प्रचलित थी। The leaders of Germany believed that some races were superior to others. तो जर्मनी के ये जो नेता थे वो मानते थे कि कुछ वर्ग जो है वो दूसरों से श्रेष्ठ हैं। Of course, they weren't alone in that. The British also thought like that. और निश्चित ही ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं थे, अंग्रेज लोग भी ऐसा ही सोचते थे। But the Germans thought, or the Nazis rather, thought about it very thoroughly and deeply, and they even exterminated people they considered inferior. लेकिन जर्मन के नाजी जो लोग हैं इसके विषय में बहुत सशक्त विचार रखते थे और कई लोगों को जो है उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। It's a very unpleasant story. I'm sorry to tell it. तो बहुत ही दुखद ऐसी ये कहानी है और बताते हुए भी मुझे खेद होता है। But it shows us how ideas can shape inhuman behavior. लेकिन ये हमें बताता है कि किस प्रकार से विचार जो है अमानवीय व्यवहार को आकार दे सकते हैं। The political systems of the 20th century in Europe caused enormous destruction. और जो राजनीतिक व्यवस्था थी 20वीं शताब्दी की यूरोप की उसने भी बहुत विध्वंस लाया है। So many people died in Russia, in China because of the ideas. तो विचारों के कारण रशिया, चाइना में बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए हैं। Millions and millions of people. और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। And this was because of ideas. और ये सब भी जो है विचारों के कारण हुआ है। Of course, there were other ideas too. निश्चित ही उस वक्त अन्य विचार भी थे। For instance, there were ideas about equality. उदाहरण के तौर पे समानता के विषय में कल्पनाएं थी। About humanity. मानवीयता के विषय में कल्पनाएं थी। So, for instance, that slavery, which had been the source of Britain's wealth, was abolished. उदाहरण के तौर पे ब्रिटेन की समृद्धि का जो कारण थी वो गुलामी, उससे नष्ट कर दिया गया। Because people believed that all human beings were valuable. क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि सभी मनुष्य का अपना मूल्य होता है। Anyway, my point is that ideas can create great evil and they can create great good. तो जो भी हो, मेरा मुद्दा ये है कि विचार जो है बहुत ज्यादा बुराई भी निर्माण कर सकते हैं लेकिन अच्छाई भी निर्माण कर सकते हैं। The Buddhist word I'm using that lies behind my use of ideas is drishti. तो जब मैं विचार कहता हूँ उसके लिए जो बौद्ध शब्द प्रचलित है वो है दृष्टि। Or in Pali, ditti. यहाँ उसे पाली में दिट्ठी कहते हैं। It means an attitude, an approach to life which may have
articulated expression. और जिसका अर्थ होता है प्रवृत्ति, जीवन को देखने का नजरिया जो हमारे व्यवहार में अभिव्यक्त होता है. But those ideas can shape our world, do shape our world. लेकिन ये जो विचार है वो निश्चित ही हमारी दुनिया को आकार देते हैं. So Baba Sahib saw very clearly the importance of these ideas. और इसलिए बाबा साहब ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इन विचारों के महत्व को देखा था. So we need to take them very seriously. और इसलिए हमें उन्हें बहुत गंभीरता से लेना है. And what I'm going to talk about today is the most important, the most basic of those ideas. और आज मैं जिसके विषय में बात करने वाला हूँ वो इन विचारों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी है. The idea that lies behind all the other ideas. तो वो विचार जो बाकी सारे विचारों के पीछे हैं. So, what is this life? तो फिर ये जीवन क्या है? Why do things happen as they happen? और चीजें जैसे घटित होती है वैसे वो क्यों होती है? Why does this happen and then that happen? तो ये क्यों होता है और फिर वो क्यों होता है? Why do we live? Why do we die? तो हम जीते क्यों हैं? हम मरते क्यों हैं? What is it that guides this life, or rather drives this life? और वो क्या होता है जो इस जीवन को मार्गदर्शन देता है या आगे बढ़ाता है, ले जाता है? Margadarshan, drive, yeah. आगे ले जाता है. What is it that brings things about? तो वो कौन सी चीज होती है जो चीजों को अस्तित्व में लाती है? At the time of the Buddha, there were two basic, broad sets of ideas. तो बुद्ध के समय पे विचारों के जो है तो मोटे-मोटे ऐसे संच थे. The first, and of course the commonest idea, was that everything happens because of the gods. तो पहला प्रचलित ऐसा विचार था कि जो भी होता है वो ईश्वर की वजह से होता है. Whatever happens, it's because of the gods. और जो भी होता है वो ईश्वर की वजह से होता है. This pandal comes into existence because of the gods. तो ये पंडाल अस्तित्व में आता है ईश्वर की वजह से. I don't know whether Retias is a god, but I don't think so. मुझे नहीं पता रिटायस ईश्वर है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो होंगे. Dr. Talwari and others, I don't think you're gods. और डॉक्टर तलवारी और दूसरे लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ईश्वर हैं. But the belief at that time would have been, without their help, this couldn't happen. लेकिन उस वक्त का विश्वास ऐसा था कि उनकी मदद के बिना ये हो नहीं सकता. If the gods want, they could just smash it. और अगर ईश्वर चाहे तो बस ये इसे उद्ध्वस्त कर सकते हैं. That was the principal belief of the time. So और ये उस वक्त का मुख्य ऐसा विचार था. it's the sort of belief that makes you think that if you offer agabati in a particular place, you'll pass an exam. तो इस प्रकार का विश्वास था कि अगर आप किसी विशिष्ट जगह पे अगरबत्ती दे देते हैं तो आप जो परीक्षा में पास हो And जाओगे. so on. This was the idea. और इसी प्रकार से इस प्रकार के विचार Our lives were in the hands of supernatural forces. तो हमारा जो जीवन है वो जो है पराप्राकृतिक चीजों के हाथ में था. Our own efforts make very little difference. और हमारे प्रयत्नों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था. So because of that, of course, what we tried to do was get into good relations with the gods. और फिर इसलिए हम क्या करते थे कि ईश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाने रखने के प्रयास में रहते थे. Just like giving chai pani to the officers. जैसे हम अफसरों को चाय पानी देते हैं. Because then they will help you, yeah? क्योंकि फिर वो आपकी सहायता करते हैं. It's a form of cosmic corruption, yeah? और एक प्रकार से वैश्विक भ्रष्टाचार का ये स्वरूप है. But that's the way people thought. You had to try to get into a good relationship with them, then they would help you. और इस प्रकार से फिर लोग सोचा करते थे कि उनके साथ संबंध अपने अच्छे रखने ताकि फिर वो आपकी मदद करेंगे. This was the major idea that people had. और उस वक्त का ये प्रमुख विचार था जो लोग रखते थे. There was another idea, not many people held this. और दूसरा भी एक विचार था, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे इसके मानने वाले. But certainly some people did who are recorded in the Buddhist scriptures. लेकिन कुछ लोग ये विचार रखते थे जिनका जिक्र जो है बौद्ध लेखों में आता है. They basically thought it's all just a matter of chance. और उन्हें ऐसा लगता था कि सभी चीजें जो है बस यूं ही हो जाती है संयोग से. What happens is just completely random. और जो भी होता है संयोगवश हो जाता है. I suppose our modern version of this is materialism. Yeah. और मुझे लगता है कि इसका आधुनिक स्वरूप अगर हम देखते हैं तो वो है भौतिकवाद. The belief that matter is supreme.
और जिसमें हम समझते हैं कि जो भौतिक वस्तु जो है वही सर्वश्रेष्ठ है and human activity makes very little real difference. और मानवीय जो भी व्यवहार है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। So these were the two principal ideas. तो ये उस वक्त के जो दो प्रमुख विचार थे। The idea that our lives are simply in the hands of supernatural forces. तो ये विचार कि हमारी जो जीवन है जो पराप्रकृतिक जो भी ऊर्जा है उनके हाथों में है। Or at the other extreme that our lives are just random. और दूसरा इसका अंतिम छोर था कि हमारे जीवन जो है बस यूं ही संयोगवश है। Just like a gamble. जैसे बस जुआ है। You throw the dice, this happens. You throw the dice again, that happens. तो बस आप फांसे फेंकते हैं, ये हो जाता है, फिर से फांसे फेंकते हैं, वो हो जाता है। No meaning, no pattern. कोई अर्थ नहीं है, कोई उसकी रचना नहीं है। So these two were the extremes. तो ये दो छोर के विचार थे। There were many other ideas that were in between those. और अन्य भी कई विचार थे जो इन दोनों विचारों के बीच में कहीं आते थे। The Buddha brilliantly analyzes them in many places in the Pali Canon. और पाली सूत्रों में जो है कई जगह पे बुद्ध बहुत ही अच्छे से इनका विश्लेषण करते हैं। Later Buddhists came to analyze them even more finely. और बाद के जो बौद्ध हैं और भी सूक्ष्म रूप से इनका विश्लेषण करते हैं। And much scholarly effort, much Dhamma effort was put into getting precisely clear what was true and what was not. बहुत ही बौद्धिक ऊर्जा उसमें डाली गई है, बहुत ही धार्मिक प्रयास किए गए हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। But these were the ideas at the time of the Buddha. लेकिन ये सारे विचार थे जो बुद्ध के समय पे थे। The Buddha just cut straight between them. और बुद्ध जो है सीधा उसमें से बीच से निकल जाते हैं। He followed what he called the middle way. और जिसे वो मध्यम मार्ग कहते हैं, उस मार्ग का वो अनुसरण करते हैं। He said our lives are not controlled by divine forces. और वो कहते हैं कि हमारे जीवन जो है वो किसी दैविक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं है। At the same time, they're not just random. और उसी वक्त वो बस ऐसे ही नहीं है संयोग। The principle is that things arise in dependence on conditions. तो तत्व ये है कि चीजें जो है वो परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होती है। Whatever arises, whatever appears before us, it's come out of a range of conditions that have formed it. तो जो भी हमारे सामने प्रकट होता है, निर्माण होता है, वो जो है परिस्थितियों के एक संच में से निर्माण होता है। Look at this pandal, this event. तो अब इस पंडाल को देखिए, इस आयोजन को देखिए। It wasn't some divine figure that created it. किसी दैविक आकृति नहीं थी जिसने इसका निर्माण किया है, कोई दैविक आकृति नहीं। And it certainly wasn't random, was it? और निश्चित ही ये संयोगवश भी नहीं हुआ है। हुआ है क्या? It took a lot of effort to bring it about. तो इसे निर्माण करने के लिए काफी प्रयासों की आवश्यकता है। Effort from so many people. और बहुत सारे लोगों के इसमें प्रयास लगे हुए A हैं। whole lot of conditions just created this pandal. और बहुत सारी परिस्थितियों ने इस पंडाल की निर्मित की है। Human conditions, physical conditions. तो मानवीय परिस्थितियाँ, भौतिक परिस्थितियाँ, वातावरण की। So many conditions we can never completely define them all. और बहुत सारी परिस्थितियाँ जिसका हम पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। The law of gravity is at work, holding this up. तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो इस पंडाल को खड़ा रखा हुआ है। Because oh no, I don't know my engineering. She knows. I can't explain. मुझे अपनी अभियांत्रिकी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। But it's true. लेकिन ये सच है। This is kept up by physical laws, yeah? तो बहुत सारे जो भौतिक नियम है उसने इस पंडाल को अपनी जगह पर रखा हुआ There's है। not some God up there holding it. Huh? तो कोई ईश्वर नहीं है जो इस पंडाल को थामे है। If he has a cup of tea, down it goes. अगर वो चाय पीने के लिए हाथ निकालता है तो गिर जाएगा वो। It's conditions that we can know and study. तो इसमें परिस्थितियां हैं जिसको हम जान सकते हैं, जिसका अभ्यास कर सकते हैं। These are the bases of everything. और यही परिस्थितियां जो है हर चीज की बुनियाद में होती है। This talk I'm giving now, well, of course, it originates, as it were, in me.
अब ये जो प्रवचन है जो इस वक्त मैं दे रहा हूँ वो एक तरह से मेरे अंदर निर्माण हुआ है। Where do I originate? लेकिन मैं कहाँ से निर्मित हूँ? Well, you ask my mum and pop. तो मुझे मेरे माता पिता को पूछना होगा। Where do they originate? Huh? अब वो कहाँ से निर्मित हुए हैं? So many conditions come together. तो Huh? बहुत सारी जो परिस्थितियाँ एकत्रित आती हैं। I've learned the Dhamma from my teacher. मैंने अपने गुरु से धम्म सीखा है। I've learned the Dhamma from Baba Sahib. मैंने बाबा साहब से धम्म सीखा है। I've learned the Dhamma from my friends. और Huh? मैंने अपने मित्रों से धम्म सीखा है। My conversations with my friends are coming out of my mouth now. तो मेरे मित्रों के साथ जो चर्चाएं हुई है वो अब मेरे मुख से बाहर निकल रही है। So many conditions create everything. बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है जो सब चीजों को निर्मित करती And है। the Buddha Dhamma, the Buddha says, there's nothing you can find that does not depend on conditions. और बुद्ध कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप ढूंढ सकते हैं कि जो परिस्थितियों के आधार पर निर्मित नहीं होती। And he sort of challenges us. और एक प्रकार से वो हमें चुनौती देते हैं। Find something. कुछ ढूंढ के दिखाइए। Can you find anything anywhere in the universe that doesn't depend upon conditions? क्या आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है? But of course, if it depends on conditions, without conditions, it disappears. लेकिन अगर वो परिस्थितियों पर निर्भर है तो फिर जब वो परिस्थितियां नहीं रहती है तो वो भी लुप्त हो जाती है। So all these conditions have created this pandal. तो इन सारी परिस्थितियों ने इस पंडाल की निर्मित की है। On Monday next week, those conditions will be removed. और अगले सोमवार को इन सारी परिस्थितियों को अलग कर दिया जाएगा। Of course, the biggest condition is that the pandal wala will not get paid anymore. और सबसे बड़ी परिस्थिति ये होगी कि हम पंडाल वाले को उसके पैसे देने बंद कर देंगे। So he's going to take it down. तो वो निकाल ही लेगा इसको। And the team that put it together, they're going to go away and have a rest. और वो सारा जो दल जिसने इसे खड़ा करने में सहायता की है वो यहाँ से चले जाएंगे। All those conditions will be taken apart. The pandal will be taken apart. तो ये जब सारी परिस्थितियाँ अलग हो जाएगी तब ये पंडाल भी अलग हो जाएगा। All these conditions created this talk. और सारी परिस्थितियाँ जिन्होंने इस प्रवचन को निर्माण किया है। After some time, a key condition will go. और कुछ समय बाद जो इसकी प्रमुख परिस्थिति है वो चली जाएंगी। Mokshsara will stop translating. मोक्षसारा अनुवाद बंद कर देगी। And the talk will be over. और फिर प्रवचन जो है वो खत्म हो जाएगा। Because she's a very important condition for my talk. क्योंकि मेरे प्रवचन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी परिस्थिति है। Actually more important than me. मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। But the conditions will disappear. The talk will disappear. लेकिन परिस्थितियाँ जो है वो लुप्त हो जाएगी और ये प्रवचन भी जो है वो लुप्त हो जाएगा। Sometime the conditions that create me will disappear. कभी-कभी जिन परिस्थितियों ने मुझे निर्मित किया है वो लुप्त हो जाएगी। They're getting closer, faster and faster. और बहुत ही तेजी से वो जो है मेरे करीब आ रही है वो They परिस्थितियाँ। have to go. और फिर इसे निकल जाना। All the conditions that support life in me will go. तो वो सारी परिस्थितियाँ जो मेरे अंदर के जीवन को सहायता प्रदान करती है वो निकल जाएगी। And the same for you, brothers and sisters. और यही बात जो है आपके लिए भी वैसे ही लागू The होती है। conditions that support our lives one day will end. तो वो सारी परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन को सहायता देती है एक दिन वो समाप्त हो जाएगी। So this is the key teaching of the Buddha. तो ये बुद्ध की प्रमुख शिक्षा है। It has many implications. और इसके बहुत ऐसे व्यवहारिक मतलब उपयोग हैं। And we'll be studying those over the next days. और आने वाले कुछ दिनों में हम उनका अभ्यास करने We वाले need to हैं। get this really clear in our minds. और इस बात को हमें हमारे मनों में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना है। Buddha says there's nothing but conditions. और बुद्ध कहते हैं कि और कुछ चीज नहीं है केवल परिस्थितियाँ ही है। So think about it. तो आप इसके विषय में सोचिए। Even meditate on it. इस पर आप चिंतन भी कीजिए, ध्यान कीजिए। Is it really true? क्या ये वास्तव में सच है? Are you convinced? क्या इस बात का आपको यकीन हो गया है? Are you shaping your life on that basis? क्या इस आधार पे आप अपने जीवन को आकार दे रहे हैं? If you're not, then to that extent, in a sense, you're not a Buddhist. और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कुछ हद तक उस अर्थ से आप बौद्ध नहीं हो। It's because of the principle of conditionality that Buddhism is not incompatible with science. और क्योंकि इन
इन परिस्थितियों के विचार के कारण जो है बौद्ध धर्म विज्ञान से विसंगत नहीं है। Buddhism isn't strictly speaking scientific, it goes beyond science. तो एक तरह से देखा जाए तो बौद्ध धर्म वैज्ञानिक भी नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म विज्ञान के भी परे जाता But है। Buddhism doesn't contradict the findings of empirical observation. लेकिन जो वस्तुनिष्ठ निरीक्षण है, उनके जो तत्व है, उसको बौद्ध धर्म जो है उसके साथ सुसंगत है। Because science is simply the exploration of conditions. क्योंकि विज्ञान जो है परिस्थितियों का ही वर्णन है, विश्लेषण है। And it defines the principles on which those conditions work. और वो उन तत्वों की व्याख्या करता है कि जिसके आधार पर ये परिस्थितियां कार्यरत होती हैं। We'll see tomorrow that there are conditions that science has not yet dealt with. और कल हम ऐसी कुछ परिस्थितियों को देखेंगे जहां तक विज्ञान अभी पहुंचा नहीं है। But Buddhism is rigorous in this way. लेकिन एक प्रकार से बौद्ध धर्म बहुत ही ऊर्जावान है इसका। There's nothing that just swayambhu just appears. तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो स्वयंभू है, जो अपने आप ही निर्मित हो जाती है। Everything comes from previous conditions. सारी चीजें जो है वो विगत परिस्थितियों में से उत्पन्न होती है। Without those conditions, it fades away. और अगर वो परिस्थितियां नहीं है तो वो चीज भी लुप्त हो जाती है। We know that the Buddha said that these were the first thoughts that came to him after his enlightenment. और बुद्ध कहते हैं कि ये वो पहले विचार है जो उनको आए थे उनके बुद्धत्व प्राप्ति के बाद। His enlightenment, which of course itself arose in dependence on conditions, took him beyond conditions. और उनका बुद्धत्व निश्चित ही जो है अपने आप उनमें निर्मित हुआ था परिस्थितियों के आधार पे, लेकिन वो उन्हें परिस्थितियों से भी आगे लेकर चला। So from his enlightened perspective, he looked at the world. तो फिर अपने बुद्धत्व के परिप्रेक्ष्य से उन्होंने दुनिया की ओर देखा। There at Bodh Gaya under the Bodhi tree. और वहाँ पे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। And he says, and we have the record of it, he saw that this being that becomes. और उन्होंने देखा और इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। उन्होंने कहा कि ये है इसलिए वो है। With the arising of this, that arises. और इसके उदित होने से उस बात का उदय होता है। This not being, that does not become. और अगर ये अस्तित्व में नहीं है तो वो अस्तित्व में नहीं होगा। With the ceasing of this, that ceases. और इस बात के लुप्त होने से वो बात भी लुप्त हो जाती है, उसका भी अंत हो जाता है। This is the central view of the Buddha Dhamma. और ये बौद्ध धर्म का केंद्रीय दृष्टिकोण है। This is what Baba Sahib committed himself to here 61 years ago. और इसी दृष्टिकोण के प्रति बाबा साहब ने अपने आप को समर्पित किया था यहाँ पे 61 साल पहले। And we ourselves need to really engage with it and understand it. और हमें भी उसमें अपने आप को झोंक देना है, उसे समझने के लिए। So initially that was an insight that was beyond words. और शुरुआत में ये ऐसी एक दृष्टि थी जिसको शब्दों में रख पाना संभव नहीं था। Enlightenment is not a thought. तो बुद्धत्व जो है वो कोई विचार नहीं है। It's a direct experience, a direct understanding. तो वो एक प्रत्यक्ष अनुभव है, एक प्रत्यक्ष समझ है। Without words, without concepts. शब्दों के बिना, संकल्पनाओं के बिना। But then the Buddha put into words what he saw. लेकिन उसके बाद बुद्ध ने जो कुछ भी देखा उस बात को उन्होंने शब्दों में रखा। And this principle of Pratityasamudpat, as I've quoted it, is his first expression. और ये जो फिर प्रतीत्य समुत्पात का तत्व है जो मैंने आपको बताया वो उनकी पहली अभिव्यक्ति थी शब्द। We'll see later that he then applied that in different situations. और उसके बाद में हम देखेंगे कि फिर उन्होंने अलग-अलग परिस्थितियों में इस तत्व को लागू किया है। Famously, he applied it to the 12 nidanas. तो ये बात प्रसिद्ध है कि 12 निदानों की जो श्रृंखला है उसमें उन्होंने उसे बताया है। People usually identify this as Pratityasamudpat. और लोग अक्सर इस बात को प्रतीत्य समुत्पात करके देखते हैं, पहचानते हैं। It's only an application of the principle. लेकिन वो उस तत्व का केवल एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। It's an application of the principle to human experience. तो मानवीय अनुभव को जो है वो तत्व लगाकर देखा गया है। And we'll be looking at that probably the day after tomorrow. तो हो सकता है परसों हम उस बात की ओर देखेंगे। But the principle itself is general.
लेकिन तत्व जो है वो आम है। For instance, the Buddha applies it to crops. तो उदाहरण के तौर पे यही तत्व जो है बुद्ध पौधों को लगाते हैं। Independence upon the seed, the soil and the sun, the plant grows. तो बीज के आधार पे, जमीन के आधार पे और जो सूरज की रोशनी है उसके आधार पे जो है पौधा विकसित होता है, बढ़ता है। No water, no sun, plant ceases. पानी अगर नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है तो पौधा भी नहीं होगा। So Pratityasamudpat, dependent arising is the best translation, I think. तो प्रतित्य समुत्पाद जो है कार्य कारण जो भाव है, जो मुझे लगता है इसका योग्य अनुवाद होगा। Means what arises in dependence on conditions. इसका अर्थ ये होता है जो भी उदित होता है वो किन्हीं परिस्थितियों के आधार पे उदित या उत्पन्न होता है। It arises dependently. और किसी परिस्थितियों के आधार पे वो उत्पन्न होता है। This principle applies to everything. और ये तत्व जो है हर चीज पे लागू होता है। And this was the central insight of the Buddha. और ये बुद्ध की केंद्रीय दृष्टि थी। This insight of the Buddha had other implications, very important ones. तो बुद्ध की ये जो दृष्टि थी इसके और भी जो है वो महत्व है। First of all, of course, if everything depends upon conditions and ceases when those conditions cease, then everything's impermanent. तो पहली बात ये है कि अगर हर चीज परिस्थितियों के आधार पे निर्माण होती है और वो परिस्थितियां नष्ट होने के बाद चीज अगर निर्माण होती है तो हर चीज अनित्य है। Whatever arises must cease. तो जो भी उत्पन्न हुआ है उसका अंत भी होना है। Whatever's born must die. तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है। Whatever begins must end. तो जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी होना है। I began this talk and it will end. तो मैंने इस प्रवचन की शुरुआत की है और उससे खत्म ही होना है। It's true of everything. और ये हर बात के लिए सच है। This is the implication of Pratityasamudpat. और ये जो है प्रतित्य समुत्पाद का व्यवहारिक अभिव्यक्ति। If things are conditioned, they must be impermanent. तो अगर चीजें संस्कारित है तो वो अनित्य ही होगी। There's another implication which is very, very important. तो इसका और एक पहलू है बहुत महत्वपूर्ण है। Of course, that what I just mentioned is the famous principle of anityata. अब जो मैंने आपको बताया है अभी वो अनित्यता का प्रसिद्ध ऐसा सिद्धांत है। There's also the principle of anatta, anatma. साथ ही अनात्म का भी सिद्धांत है। If everything arises in dependence on conditions, there's nothing that's independent of conditions. तो अगर सभी चीजें परिस्थितियों के आधार पे उत्पन्न होती है, उन पे निर्भर है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अपने आप में स्वतंत्र है। The most important thing is there's nothing in here that is not subject to conditions. और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। In other words, there's no atma. और दूसरे शब्दों पे कोई आत्मा नहीं है। दूसरे शब्दों में Atman is a permanent self that's independent of conditions. तो आत्मा उसे कहा जाता है कि जो एक नित्य स्व है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। So when the Buddha denied this, it was a huge revolution in Indian thinking. और जब बुद्ध ने इस बात को नकार दिया था तो भारतीय विचार में बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी। There's no Atma. तो कोई आत्मा नहीं है। You can look. आप देख सकते हैं। Look at yourself. आप अपनी ओर देख सकते हैं। You can look at your body. आप अपने शरीर की ओर देख सकते हैं। Well, the doctors amongst you know that there's no cell in your body that survives more than 7 years. तो आप में से जो डॉक्टर है वो जानते हैं कि आपके शरीर में ऐसी कोई पेशी नहीं है वो जो 7 साल से ज्यादा जिंदा रह सकती है। Every cell in your body is renewed. तो आपके शरीर की हर पेशी जो है वो नवनिर्मित होते रहते हैं। In effect, your whole body is renewed. तो एक तरह से आपका पूरा शरीर ही जो है नए तरीके से निर्मित होते रहते हैं। I often mention that there used to be a picture of me when I was about that tall. तो मैं अक्सर बताते रहता हूँ कि मेरा एक तस्वीर है जब मैं इतना छोटा सा था। Such a sweet little boy. बहुत ही प्यारा सा मैं बच्चा था। So much hair. बहुत सारे बाल थे। कहाँ है? कहाँ है वो सारे बाल? So everything about me is different. तो अब मेरे विषय में जो कुछ भी बात है वो अलग है। Even
Mokshsara is different. मोक्षसारा भी अलग है। Just a few weeks ago, she was Bharti. तो कुछ ही हफ्तों पहले वो भारती थी, Now she's Mokshsara. अब वो मोक्षसारा है। Everything about us is changing. तो हमारे विषय में जो कुछ भी है वो बदल रहा है। Your feelings changing all the time. तो आपकी जो भावना है वो हर वक्त बदल रही Your है, thoughts changing all the time. हर वक्त आपके विचार बदल रहे हैं, Your consciousness changing all तो the आपकी time. चेतना हर समय बदल रही है। You cannot find any Atman. तो आप कोई भी आत्मा नहीं ढूंढ सकते। Go and look. तो आप जाइए और खोजिए उसको। Look inside yourself and see if you can find something permanent. तो आप अपने अंदर जाके देखिए और देखिए क्या ऐसी कोई चीज है जो नित्य है, स्थायी है। Can you find anything that doesn't change? तो क्या आप ऐसी किसी चीज को ढूंढ सकते हैं जो kभी बदलती नहीं है? Of course, Baba Sahib pointed out that this teaching of an Atman denies caste. और बाबा साहब ये भी बताते हैं कि ये जो अनात्म की शिक्षा है यही जाति को नकारती है। If there's no permanent self, how can we have a fixed caste? तो अगर कोई स्थायी ऐसा स्व ही नहीं है तो एक स्थायी जाति कैसे रह सकती है? Asvaghosha, the great poet and playwright and philosopher of Buddhism, pointed this out in his very important Vajrasuchi. तो अश्वघोष जो बौद्ध धर्म के महान ऐसे कवि दार्शनिक रहे हैं अपने सूत्र में वज्र सूची में इस बात को बताते हैं। The diamond-tipped needle. तो वो कहते हैं कि ऐसी सुई जिसका जो छोर है वो वज्र का बना है, हीरे का बना हुआ है, Which he teases out caste. और वो जो है जाति को ऐसे उखाड़ लेते हैं सुई He से, skewers caste. और वो जाति को ऐसे छेद देते हैं उससे। In a way, Baba Sahib's annihilation of caste is the Vajrasuchi for our times. तो एक तरह से बाबा साहब का जो जातिभेद निर्मूलन है वो हमारे समय के लिए वज्र सूची है। But with no Atman, no caste. क्योंकि अगर आत्मा ही नहीं है तो जाति भी नहीं है। In a way, you could say no race, no nation, nothing. और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि कोई वर्ण नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है। Baba Sahib says that if there is no fixed self, then it means you can change. और बाबा साहब कहते हैं कि अगर स्थायी ऐसा कोई स्व नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है कि आप बदल सकते हैं। So this is the second implication of Pratityasamudpat. और ये जो है प्रतीतसमुत्पात का दूसरा पहलू है। There's one more. और एक बात है, Many of you will be recognizing this. और आप इस बात को जानते होंगे। These are the three lakshanas. तो ये जो है 3 लक्षण हैं। Of course, if everything is dependent on conditions, you can't hold anything. अब निश्चित ही अगर सारी बातें परिस्थितियों पर निर्भर है तो आप किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं रख सकते। You can't stop the flow of conditions. और आप परिस्थितियों के बहाव को रोक नहीं सकते। Maybe I really like standing here, have you all looking at me? तो हो सकता है कि मुझे यहाँ खड़े रहना बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं। I feel like a big film star. हमें बहुत बड़े जो है फिल्म स्टार के जैसे मुझे लगता है। On Awaz TV and what is it? UTCV, what is it? UTS Buddha? तो यूसीएन बुद्धा और टीवी में है यहाँ पर। Maybe I feel a big star. तो एक बहुत स्टार के जैसे मुझे लगता है। Maybe she's starring with me. But the film is going to end. लेकिन ये जो भी फिल्म है वो खत्म होने वाली है। And we'll just be ordinary human beings in just a few minutes. और कुछ ही पलों में हम जो है सर्वसामान्य मनुष्य बन जाएंगे। We can't hold it. तो हम इसे पकड़ कर नहीं रख सकते। If we just keep talking, you will all leave. और अगर हम बस बोलते ही रहेंगे तो आप लोग यहाँ से चले We जाओगे। can't stop conditions. तो हम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते। If we try to stop them, we will suffer. अगर हम उन्हें रोकना चाहेंगे तो फिर हम दुख पाएंगे। If we try to stop things from changing, we're going to be in pain. और अगर हम चीजों को बदलने से रोकेंगे तो फिर हम पीड़ा में होंगे, दुख में होंगे। So this is of course the lakshana of dukkha. और निश्चित ही ये दुख का लक्षण है। The lakshana that tells us that whatever we cling to will fail and we will feel pain. और ये लक्षण हमें बताता है कि वो कोई भी चीज जिससे हम आसक्त होते हैं वो हमें धोखा देने वाली है और फिर हम पीड़ा में होंगे, दुख में होंगे।
So we've only made a little step beyond the principle of conditionality. तो ये जो संस्कारिता का तत्व है उससे एक की कुछ ही कदम हमने आगे लिए. But you can already see how big an influence that must have upon our lives. लेकिन आप देख सकते हैं अभी से कि इस बात का हमारे जीवन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव होता है. If we really accept conditionality, then we must live on that basis. अगर हम वास्तव में संस्कारिता को स्वीकार करते हैं तो फिर उसी आधार पे हमने हमारा जीवन जीना चाहिए. It means we need to study conditions to see which conditions bring about the best result. तो फिर इसका अर्थ होता है कि हमें परिस्थिति का अभ्यास करना चाहिए ये देखने के लिए कि कौन सी परिस्थितियां हमें सबसे अच्छा परिणाम दे सकती The है. best result for us, the best result for all. तो हमारे लिए सबसे अच्छा परिणाम और सबके लिए सबसे अच्छा परिणाम. Even Buddhahood arises in dependence on conditions. तो बुद्धत्व भी जो है वो भी परिस्थिति के आधार पर निर्माण होता है. So if we study those conditions, we can bring them about. तो अगर हम इन परिस्थितियों का अभ्यास करते हैं तो हम उन परिस्थितियों को निर्माण कर सकते हैं. So this gives us some hope, some future. तो ये हमें कुछ फिर आशा देती है, कुछ भविष्य देती है. Baba Sahib studied the conditions for a good society. और बाबा साहब ने अच्छे समाज के लिए परिस्थितियों का अभ्यास किया He था. saw those conditions in the Buddha Dhamma. और उन्होंने इन परिस्थितियों को बौद्ध धर्म में देखा. He espoused those conditions and he encouraged others to do so. तो उन्होंने इस परिस्थिति को प्रोत्साहन दिया और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित And किया. brothers and sisters, look at you. और भाइयों बहनों आप अपनी तरफ देखिए. You are the proof of the effectiveness of Baba Sahib's insight. और बाबा साहब की जो दृष्टि थी उसका जो प्रभाव है उसका आप सबूत हो. So if we study conditions, we can know how to create a good life for ourselves and for all. तो अगर हम परिस्थितियों को जानते हैं तो हम जानते हैं कि अपने लिए और औरों के लिए अच्छे जीवन को हम किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं. If we understand conditionality, we can accept impermanence. तो अगर हम संस्कार परिस्थितियों को अपनाते हैं तो फिर हम अनित्यता को भी स्वीकार कर सकते हैं. If we understand conditionality, we know that there's nothing in here that I can really say that's me. अगर हम संस्कारिता को जानते तो हम कह सकते कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैं हूँ. There's nothing here to be proud of. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके विषय में मैं गर्व कर सकता हूँ, अहंकार कर सकता हूँ. I'm a bundle of conditions, you're a bundle of तो conditions. मैं संस्कारिता का एक गठर हूँ, आप भी संस्कारिता का एक गठर हो. So we can let go of the idea of a fixed self. और इसीलिए एक स्थायी स्व की जो कल्पना है उसको हम छोड़ सकते हैं. If we understand conditionality, then we will not cling to things. अगर हम संस्कारिता को समझते हैं तो फिर हम चीजों से आसक्त नहीं होंगे. And we will try to live in an open and generous way. और एक खुले और दातृत्व से भरे हुए तरीके से हम जिएंगे. In harmony with all others. और दूसरों के साथ सुसंवादित रूप से हम रहेंगे. So the Buddha's insight into conditionality goes very, very deep. तो बुद्ध की संस्कारिता को लेके ये जो दृष्टि थी वो बहुत ही गहरे जाती है. It can shape a better life for us, or it can be the basis on which we shape a better life for ourselves. तो हमारे अच्छे जीवन का ये आधार हो सकती है या उस बात का आधार हो सकती है जो अच्छे जीवन को निर्मित करे. And the basis for a better life for all. और सभी के लिए अच्छे जीवन की वो बुनियाद हो सकती है. So I hope that these points are sufficiently clear. तो मुझे लगता है ये जो बातें हैं वो पर्याप्त रूप से स्पष्ट हुई होंगी. There could hardly be a more important topic. और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा कोई विषय हो ही नहीं सकता. Don't just say yes, 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 Pratityasamudpat. तो सिर्फ इतना मत कहिए हाँ 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 प्रतीत्यसमुत्पात. Look at your experience. तो आप अपने अनुभव की ओर देखिए. It's not just some abstract law that you have to just follow. तो ये कोई ऐसे काल्पनिक ऐसा नियम नहीं है कि जिसका बस आपको अनुसरण करना है. It's something you can actually see in yourself and around you. तो ये ऐसी कोई बात है जो आप अपने अंदर देख सकते हैं और अपने इर्द गिर्द भी देख सकते The हैं. more convinced you are of conditionality, universal conditionality, the better your life will be. तो वैश्विक संस्कारिता के विषय में आपको जितना यकीन आएगा उतना ही ज्यादा आपका जीवन अच्छा होगा. But what exactly that means and how it works out, we'll see more
over the next 3 days. लेकिन इसका वास्तव में अर्थ क्या है और ये किस प्रकार से कार्यरत होता है, ये आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे। Because there's so much more to tease out of this very, very important doctrine. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा जो सिद्धांत है, इसमें से देखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, इसमें से निकाला जा सकता है। So brothers and sisters, let's honor what happened here in 1956. तो इसलिए भाइयों बहनों, हम उस बात का सम्मान करेंगे जो यहाँ पे 1956 में हुआ था। Let's honor what Baba Sahib launched here, this Dhamma revolution that he launched here. तो जो बाबा साहब ने यहाँ पे शुरुआत किया था, जो धम्म क्रांति यहाँ पे शुरुआत की थी, उसका हम सम्मान करेंगे। Let's honor the revolution launched by the Buddha 2,500 years ago. तो 2500 साल पहले बुद्ध ने जिस क्रांति का आरंभ किया था, धम्म क्रांति का, उसका हम सम्मान करेंगे। We can honor both Baba Sahib and the Buddha by really understanding this doctrine that is central to both of them. और ये जो सिद्धांत दोनों बातों के केंद्र में है, उसको समझकर हम उसका सम्मान कर सकते हैं। Really testing our experience हम वास्तव में अपने अनुभवों की जांच करके and really convincing ourselves. और वास्तव में अपने आप को उस बात का यकीन दिलाकर, And then we will help this great mission of transformation of society that Baba Sahib initiated take a step further. और फिर बाबा साहब ने समाज परिवर्तन का ये जो मिशन शुरू किया था, उसको हम आगे ले जाने में सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।